रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस संकट के कारण पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने लिए वड्डे ऐलान किए हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया कि रेपो रेट के 0.75% की कटौती की गई है। इसनूं 5.15% तो घटा के 4.40% कर दिता गया है। रेपो रेट वो दर है जिस उत्ते आरबीआई बैंकों को करजा दिंदा है। इस दे लई रेपो रेट घट होने कारण कर्जे की कीमत घट होगी और कर्ज दातावां की EMI सस्ता होने की उम्मीद है। इस तो इलावा आरबीआई ने कोरोना वायरस के फैलण के मद्देनज़र लोन लैण वालियां नूं वड्डी राहत दी है। आरबीआई ने होरनां वित्ती संस्थावां दे नाल सारे बैंकां, गैर बैंकिंग वित्ती संस्थावां ते हाउसिंग वित्त कंपनियां नूं मियाद दे कर्जे की किश्त 3 महीनों के लिए मुलतवी करने की इजाजत दी है। इसका मतलब यह है कि जे तुसीं किसी बैंक तो कर्जा लिया अते हर महीने इसकी EMI दिंदे हो तां किसी कारण करके तुहाडी EMI मौजूदा हालातां दे विच 3 महीनों के लिए नहीं दित्ती जांदी तां तुहाडा CBIL स्कोर खराब नहीं होवेगा। The MPC voted for a sizable reduction in the policy repo rate and for maintaining the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth, mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target. While there were some differences in the quantum of reduction, the MPC voted by a 4-2 majority, that is by a 4:2 majority, to reduce the policy repo rate by 75 basis points to 4.4%. I repeat, the rate cut decision is 75 basis points and accordingly the repo rate stands reduced from 5.15% to 4.4%. Simultaneously, the fixed rate reverse repo rate, which sets the floor of the liquidity adjustment facility, that is the LAF corridor, was reduced by 90 basis points. I repeat, 90 basis points to 4%, thus creating an asymmetrical corridor. All commercial banks, including regional rural banks, small finance banks and local area banks, cooperative banks, all India financial institutions and NBFCs, including housing finance companies and microfinance institutions, that is all lending institutions basically in the system, are being permitted to allow a 3-month moratorium. I repeat, all the lending institutions are being permitted to allow a moratorium of 3 months on payment of installments in respect of all term loans outstanding as on 1st March 2020. The second measure under this relates to deferment of interest on working capital facilities. In respect of working capital facilities sanctioned in the form of cash credit, overdraft, lending institutions are being permitted to allow a deferment of 3 months on payment of interest in respect of all such facilities outstanding as on 1st March 2020.